most of the people they think that is actually the front and this is the back. ये Yes. हमें आज हमें पता लगा. So they stopped constructing it here. Hence you can see this This sudden abrupt ending. ending. कहते हैं कि एक समय में महाराजा हरी सिंह जी का प्लान था ये लेक फ्रंट बनाने का. अगर आप पुराने फोटोज देखें, देयर यूज्ड टू बी अ रनिंग बैल्कनी. तो यहाँ पे हाथी खड़े किए थे पंतीथी में, यहाँ कुछ वो सब था. आपके पिताजी की शादी हुई थी, हमें डॉक्टर कर्ण सिंह जी ने इतने बड़े लड्डू भेजे थे हमारे घर. एयरपोर्ट में उतरे एंड वहाँ से दे केम बाय कार. देयर वाज अ बिग रिसेप्शन दैट टाइम. बहुत लोग थे रोड्स के दोनों साइड. सो फॉर एग्जांपल द सैंडस्टोन वाज फ्रॉम बिलौर. दीज पेबल्स स्टक ऑन द वॉल्स आर फ्रॉम द तवी. तो जैसे एक ब्लॉक किसी ने यहाँ बनाया, कार्विंग किया, उठा के वहाँ फिट किया, तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ पजल पूरा सेटअप. राजा अमर सिंह जी यहीं से आते थे. आई लर्नड अ लॉट अबाउट जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री फ्रॉम कॉन्वर्सेशंस विद हिम. मैं बैठा था उनके डेस्क पे दिल्ली में और वो मुझे सिखा रहे थे श्लोक. Tell me something about your Dadaji's. कि worship उनका style क्या है? How much? Because he is one person. He's so learned. He knows Sanskrit. He has been मतलब writing books. I find him मतलब अगर if you want to know any Dogra literate person, मतलब apart from his royal background, he is the ultimate. So can you tell something about him? No, I think you have described him well. For the Dogras, for Dogra community, for Jammu and for Kashmir, he is that one iconic figurehead who No, is if you leave his who is royal still also, so present he's present and the kind on a of national, international level. For intellectual Jammu and back. Kashmir, for Dogras, he is the most senior iconic person, which is very speaks a lot for his own personality. कि आज भी इतना रेलेवेंस, इतना आप कह सकते हैं प्यार या इम्पोर्टेंस होल्ड करते हैं लोगों के दिलों में, लोगों के माइंड्स में. सम ऑफ माय अर्ली मेमोरीज विद हिम. मैं बैठा था उनके डेस्क पे दिल्ली में और वो मुझे सिखा रहे थे श्लोक लिखना. छोटी सी पुस्तक में राइटिंग श्लोक्स. कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम. 6 साल से वो सीख रहे हैं हम. अच्छा. और वो कहते थे हर शाम को आप रिसाइट करो ये शिव भगवत गीता, श्लोक. शिव श्लोक, भगवत गीता. तो ऐसे मेमोरीज हैं उनके साथ. he is a big intellectual. So would he read out the stories for you in the evening whenever he was free? He would Jammu and Kashmir history. अच्छा. I learnt a lot about Jammu and Kashmir history from conversations with him. अच्छा. महाराजा गुलाब सिंह जी का हो, जनरल जोरावर सिंह, our ancestors, our lineage, वो काफ़ी अर्ली एज से मैंने उन्हीं से सीखा. From stories, through conversations. So मतलब he would sit, even now he sits with you and just we still have talk. a conversation. We still talk. He is very happy. Amar Mahal is very close to his heart. अच्छा. क्योंकि ये उन्होंने बनाया है म्यूजियम. वो कहते हैं ना, जो चीज़ें उन्होंने अपने हाथों से बनाया, बाकी चीज़ें उनके एंसेस्टर्स ने बनाया, उन्होंने इनहेरिटेंस मिला है, पास ऑन किया. ये चीज़ें उन्होंने अपने हाथों से बनाया. तो ही सिंग दैट इज़ वेरी डियर टू हिम, दैट इज़ वेरी क्लोज टू हिम. तो वो काफ़ी खुश है कि मैं पिछले कई सालों से एक्टिवली इनको मेंटेन कर रहा हूँ, डेवलप कर रहा हूँ, नए जनरेशन के आँखों में दिखा रहा हूँ ये चीज़ें. तो ही इज़ हैप्पी अबाउट दैट. So how would you like to look at yourself? How do you connect yourself with this Mahal as a next generation? And how would you perceive ki what you are going to do and how it would, how this palace would look 50 years from now? Well, I think it would look very similar. I would not change too many things about the way it looks. It is, as you are aware, you're also working a lot in heritage and preserving culture and history. काफ़ी challenges होते हैं म्यूजियम को मेंटेन करना, to keep museums relevant. I think restoration of museums is a that is a big challenge. big work. It is not any modern building that you can repair and maintain
easily. Um, then upgrading the museum experience for young generations. Yes, that's चलो more. ठीक है, मैं इसी फैमिली का हूँ, मैं जम्मू का हूँ, ये मैं काफ़ी इन्वेस्टेड हूँ इस म्यूज़ियम में, तो मेरा इंटरेस्ट है। पर जो नॉर्मल बाकी टूरिस्ट हो या कोई सिटीज़न हो जम्मू का, उनको उनका इंटरेस्ट कैसे बढ़ाए इसमें इसमें? बढ़ाया जाए. तो to keep younger generations engaged, that is a challenge. So making the experience more engaging, more You interactive. have to keep the museum living. It has to be living. Yes, it has to be a And living for that museum. I think best thing is you keep introducing the new stories, new things to the So whatever the legacy you have. जी. So I think if you ask me about this museum, we are in this stage of transforming from a display exhibition theme to a interactive, cultural, engaging events theme. तो पुराने ज़माने में म्यूज़ियम होता था, आप पेंटिंग्स लगाओ, आर्टिफैक्ट्स लगाओ, आओ देखो. नाउ वी आर मूविंग ऑन फ्रॉम दैट, वी आर परहैप्स लेट, ये चीज़ें काफ़ी पहले हो गई है बाकी म्यूज़ियम्स में. To make it more engaging, for example, we have the annual Tavi festival of culture, arts, ideas, artifacts, dance, music, literature, food. This remains the center location, the venue for that. Similarly, we have the Basoli art program. 4.5 साल हो गए हैं. We have started this program for preserving miniature painting बसोली फॉर्म में. हम 4 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स देते हैं हर साल. मास्टर पेंटर है हमारे सोहन बिलोरिया, बसोली में रहते हैं, वहीं पे काम करते हैं. सो एंड यू विल बी हैप्पी टू नो दिस प्रोग्राम इज़ ग्रोइंग. एवरी ईयर वी हैव मोर स्टूडेंट्स कमिंग कि हमें भी इंडक्ट करो, हमें भी इंडक्ट करो, जम्मू सिटी से, नॉट ओनली फ्रॉम बसोली और कठुआ से. So students want to learn. स्टूडेंट्स this वांट टू art. लर्न, दे वांट टू पार्टिसिपेट. और फिर पुरानी बिल्डिंग है, लॉट ऑफ resources efforts go into the actual restoration. For example, आप ये front facade देखिए बिल्डिंग का, जो भी दीवारें हैं that are facing the tavi, for the past 60 years they have been hit by moisture, by rain, they have not been cleaned, they were completely black with algae, fungi, etc. This year we spent a large portion of our budget in restoring the wall, और मैं आपको बाद में दिखाऊंगा before and after photos. We have restored it to the natural original red brick pristine form. तो ऐसी चीज़ें हैं. So that is a part and parcel of maintaining an That's part ancient and parcel or heritage building. It is also, Amar Mahal is an iconic tourist landmark of Jammu city. that's true. One can even say of Jammu and Kashmir. So we have a lot of public, lot of tourists, lot of yatris coming here. So also we need to slowly develop more infrastructure for that, basic infrastructure facilities for them. I think I would have liked to be present for the construction of this building because it is a fascinating building. Museum तो है, but I think for me the main attraction is the architecture, the structure. See the detailing. Lot of the materials used are from Jammu, indigenous to Jammu. So, for example, the sandstone was from Bilaur. These pebbles stuck on the walls are from the Tavi. Many aspects like this. I think I would have liked to be present for the construction. I wish I was present with my great grandfather Raja Amar Singh ji उस समय में. To have seen the To have seen construction the going plans, on. design, execution, and construction of this building. अगर आप मुझे पूछे तो मैं बोलूँ कि महाराजा हरि सिंह मैरिज. जैसे he told the जैसे बताया ना कि how it came. एक तो the main function was held there और डोली आई होगी, rituals हुए होंगे सारे either here or in the हरि निवास. Like your mother or your aunt, वो जब आए थे वो भी यहीं आए थे? Yes. शादी होके. So after they got married, their wedding reception was here in Jammu. तो मैंने story सुने, they airport में उतरे and वहाँ से they came by car. There was a big reception that time. बहुत लोग थे roads के दोनों side. बहुत लोग आज भी आते हैं मेरे पास. बेटा जब
आपके पिताजी की शादी हुई थी, हमें डॉक्टर कन सिंह जी ने इतने बड़े लड्डू भेजे थे हमारे घर। ऐसे ऐसे कहानियाँ बहुत है। दे हैड अ रिसेप्शन हियर व्हेन दे केम। योर बुआ's मैरिज तो वो शायद हमें भी वी कीप हाँ हियरिंग स्टोरीज की कि जब उनकी शादी हुई तो यहाँ पे हाथी खड़े किए थे पंतीथी में, यहाँ कुछ वो सब था। वी कीप हियरिंग द यस स्टोरीज। यस, काफ़ी फंक्शंस मुबारक मंडी में हुए और ये उनका रेजिडेंस रहा। तो फॉर ऑल ऑफिशियल फंक्शंस वो उधर महाराजा main- वहाँ जाते थे। अच्छा और मतलब it was also functional. इट वाज हाँ फंक्शनल हाँ, ऑफिस वहीं था, टिल ओनली रेजिडेंस 47। वाज मुबारक मंडी वाज द ऑफिशियल गवर्नमेंट हेडक्वार्टर्स। महाराजा's headquarters. अच्छा नहीं, व्हेन दे केम फ्रॉम कृष्णनगर आफ्टर 47 जब वो अटैक हुआ, दे केम, सो दे केम टू They came here. दे केम। Amar Mahal and Hariniwas दोनों। This used to be the main entrance अच्छा। of the palace. राजा अमर सिंह जी यहीं से आते थे। This was the east facing entrance. तो ये उनका तो यहाँ entrance से रहता था। उनका कैरेज यहाँ से उनका कैरेज ऐसे आता था और जो इसका जो आप देख रहे हाइट है, स्टेप्स के बाद जो हाइट है, कैरेज का हाइट बिल्कुल वही रहता था। अच्छा। तो कैरेज से सीधा वो उस पे निकलते थे, मतलब इस वो सीढ़ियाँ प्लेटफॉर्म नहीं पे। चढ़ते थे। करेक्ट करेक्ट। तो ये एंट्रेंस रहता था उनका। तो और मेन एंट्रेंस वहाँ से है। हाँ, ऐसे आते थे, ऐसे आकर। ये मतलब ये चीजें आपने लेटर एडिशन ये सब लेटर एडिशंस हुए क्योंकि ये पब्लिक म्यूजियम बन गया। पहले बिल्कुल प्राइवेट रेजिडेंस होता था। वो ऐसे आके इधर उतरते थे। दिस वाज हिज मेन एंट्री। ये दिस वाज द मेन। दिस वाज हिज मेन एंट्री। वो Okay. यहाँ से आते थे अंदर। तो यहाँ से फिर मेन उस पे जाके। यहाँ पे नीचे इनके पब्लिक एरियाज होते थे, लिविंग क्वार्टर्स, सिटिंग एरियाज, मीटिंग रूम्स, एंटरटेनमेंट रूम्स, और ऊपर उनका प्राइवेट रहता था यहाँ पे अच्छा, सारा। द बेडरूम्स वुड बी अपस्टेयर्स। यस। तो बट यहाँ पे मैं आई सीन, मतलब देखा है कि दिस होल बिल्डिंग हैज ओनली वन स्मॉल बालकनी जो ओनली आगे दिस बैक। अगर दैट्स अ वेरी गुड ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन। अगर आप पुराने फोटोज देखें, देयर यूज्ड टू बी अ रनिंग बैल्कनी अच्छा ऑल अलोंग, अ वुडन बैल्कनी। अच्छा 6 फुट का वुडन बैल्कनी ऐसे ऐसे रनिंग ऑल अलोंग। आई थिंक इट वाज इन द 60s या 70s इट वाज रिमूव्ड। वो मेंटेन नहीं कर पाए अच्छा तो वुडन वो था। हटा दिया गया। ओके, तभी मुझे ना सिर्फ वो ये एक ये क्या है, ये भी ये बैल्कनी, ये टेरेस टेरेस है। this is ये a एक बड़ा terrace. बैल्कनी टेरेस है। अच्छा, दिस इज द टेरेस, दिस इज द बिग फ्रंट टेरेस। है ना? ये आपने देखा होगा नहीं? नहीं, ऊपर नहीं गए हम। आई विल शो इट टू यू। ये दिखा दो। और वो जो पीछे जहाँ पर महारानी तारा देवी बैठती थी, दैट वाज एक्चुअली द बैक, जो वो छोटी सी बालकनी है ना ऊपर, उनके कमरे के बाहर जो बालकनी है। हाँ हाँ, वो उनका ना, कमरा वो होता उनका था। दैट था। वाज देयर लिविंग रूम। वो एक्चुअली वी हैड दैट कांसेप्ट कि वो एंट्रेंस है तो नहीं इसलिए। नहीं, ये एंट्रेंस अब होता था। एंट्रेंस में ये जी, सामने टेरेस है। एंड दैट इज फेसिंग जम्मू सिटी, दिस इज फेसिंग तवी रिवर। हाँ। कहते हैं कि एक समय में महाराजा हरी सिंह जी का प्लान था ये लेक फ्रंट बनाने का। ये जो वाला जो जो अभी आप बन रहा है, जो आप आज की डेट में सुन रहे लेक फ्रंट, लेक हाँ, डेवलपमेंट, वो ये होता था। दिस वन। अच्छा। यस। एंड बाद में इट वाज शिफ्टेड फ्रॉम हियर टू दैट एरिया। काफ़ी हेरिटेज कॉन्जर्वेशनिस्ट आज भी कहते हैं कि दिस इज़ अ बेटर लोकेशन, क्योंकि जो रिवर का जो फ्लो है एंड इंटेंसिटी है, इट इज़ लीस्ट हियर। तो ये भी दीवार है कोई? नीचे रिटेनिंग वॉल है, अच्छा, रिटेनिंग वॉल। जो जैसे पुराने फोर्ट वॉल्स होते थे पैलेस हाँ, के साथ, नीचे 2 रिटेनिंग वॉल्स है। और ये कहते हैं तभी भी वाज आल्सो ऑन टू दिस साइड ना, अब तो उसने अपना यस कोर्स यस। चेंज किया है। और ये दरबार हॉल ओके, होता था। ये जो अब हमने थ्रोन रूम बनाया, सो दिस इज द फ्रंट फसाड है ना? दिस इज योर राइट, दिस is इज the द फ्रंट फसाड ओरिजिनली। अब वो फ्रंट फसाड बन गया बिकॉज द पब्लिक गोज फ्रॉम देयर। सो दिस इज अ गोल्ड थ्रोन जो वो हमने द देखा गोल्ड थ्रोन रूम, द दरबार हॉल व्हिच हाउसेस द 47 मिनिएचर वो पेंटिंग्स, miniature painting. So Basoli this was paintings. दरबार हॉल। This is a darbar hall. And next to that is a contemporary art gallery. वहाँ पे वो तो we can tell the viewers we already have documented that, so we are not showing it in this episode. वो हमने पहले ही डॉक्यूमेंट करके पहले पिछले एपिसोड में दिखाया है। and these were the walls I was talking about. जो आपने बोला Because कि of the rain and moisture they had become completely black. हम्म। अब आप देखेंगे it is as good as the front side, the back side.
So this is front. मुझे आज Well, पता in लगा है. today's date, I call it tavi facing and city facing. Okay. So this is a tavi facing side. That side faces Jammu city. So you. और अगर आप देखिए, this is all in one line. These properties, you start with अमर महल, फिर हरी निवास, फिर मुबारक मंडी. तो ये तीनों एक ही Same. लाइन में, सेम ही हिल साइड में. So you were saying कि ये आधा रह गया था बीच में. This palace could not be finished. तो किस तरह? It was not completed as was per the original plan. So they stopped constructing it here. Hence, you can see this sudden abrupt ending without any windows or doors. That was the reason for that. But lot of details, like you see, just look at this pillar. If you see this pillar, if you look at the detailed carvings up there, there's so much attention to detail in this building. मैं इधर रहता हूँ, पर हर बार जब मैं आता हूँ, मैं नई चीज़ मिलती है. हाँ, नई चीज़ मिलती है. मैं भी देखता हूँ ये क्या चीज़ है. And lot of these items were sourced in Jammu, made in Jammu. अच्छा. वो आपने बताया पेबल स्टोन्स तभी के. Pebble stones, काफ़ी ब्लॉक्स बने. जैसे इंटीरियर्स में देखेंगे आप, रेट्रोफिट हुआ. अच्छा. तो जैसे एक ब्लॉक किसी ने यहाँ बनाया, कार्विंग किया, उठा के वहाँ फिट किया. तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ पजल, पूरा सेटअप. We can show you the what we call the city side, city facing side of the palace. And most of the people they think that is actually the front and this is the back. ये Yes. हमें आज हमें पता लगा. और अगर हम फ्रंट और बैक की बातचीत कर रहे हैं, इट इज़ वेरी यूनिक. द फ्रंट इज़ वेरी डिफरेंट. अगर आप आर्किटेक्चर देखें, द बैक इज़ वेरी डिफरेंट. पर्सनैलिटी अलग है बिल्डिंग की, इस साइड से और उस साइड से. ये कोना देखिए आप, जस्ट लुक एट द डिटेल हियर, द विंडोज, द कार्विंग्स. About 10 years ago, we restored the entire roof. अच्छा. जो इससे पहले इसका छत होता था, it was that old wooden carvings. It's a wooden roof. तो वो हमने replace किया. That was a big task. So you have bay windows also here? Yes. वो सामने है. The pipes, the plumbing. So how do you manage that? That is an ongoing restoration job. The But- process never ends. Because that will be difficult to bring new pipes and to dig out. Yes, है ना? yes, it's difficult. You can't move the old things around too much. बाहर से retrofit करना पड़ता है हाँ वो चीज़ें. किया है. For example, all the electricals, all the plumbing, lot of things that we have to adapt. So now we know that this is actually the back. Front is on the other side. It's east facing and tavi facing. So Yes. this is the back. And these are statue gardens. So statue of Maharaja Gulab Singh Ji, installed by my grandfather अच्छा. himself. This was a tribute to the founder of The state. erstwhile Jammu, Kashmir, Ladakh. And today also happens to be his Raj Tilak Divas. Yes. So he's shooting it on this Yes. auspicious day. Auspicious day. So what are these? That is part of the hotel. Acha, that is That's the the part. Hari Niwas structures. These are also as old as. No, these are new. New ये तो ones. नए बनाए गए. See the difference in the structure, ना? Hari Niwas और Amar Mahal में. This was the father, that was the son. So personalities अलग है, you know, likes, dislikes. And मतलब the kind of personality which is usually portrayed of Shri Maharaja Hari Singh Ji, but if you compare his house, his palace, it's very simple. Yes, है ना? yes, It's not ostentatious. yes. मतलब This like is also a very interesting building. This is like a French chateau, almost like a castle.
building. So you that know. are- It has that is those why I turrets was there. It has asking- those castle turrets there. I was asking you, why French? Hmm. Hari Singh. This year we also restored each pillar. If you see these red maroon Red. pillars, the wooden pillars, this year we actually restored each one of them. I think we have nearly 60 pillars No, in the whole building. in the This whole, outside. like these, the wooden ones. Uh, each one was scraped, repaired, repainted. So you know these restoration works are ongoing. On my list I already have the next 10 things I have to do. Do. But there's only so much you can take up each year. But we will keep asking what you are doing. हाँ। What are you doing? What नहीं are you बहुत doing लोग to मुझे save the पूछते हैं temples? बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि क्या करते हो अमर महल में बैठे नो माय ग्रैंडफादर आस्क्ड मी he grew up in a different era. He was born as a crown prince and then became governor, etc. तो उनका approach अलग है. I am obviously very different. I am very hands on. मैं सब कुछ अपने आप ही करता हूँ. तो he keeps asking क्या करते हो जम्मू में बैठे अमर महल में क्या इतना क्या काम है अमर महल में इतनी अच्छी जगह है सेट है सारा कुछ ऐसे इसको मेंटेन करना अलग ही टास्क है which No, I think because you said you keep coming to this place, you stay here for at least 10 to 12 I days. spend half the month here. Half the month here and then presently nobody knows the building the more than you know it. जी Because you are conserving it. You know where the mirror has to, the Yes. glass has to be changed, where you have to Yes. do something. So it's, I think you are the only person who knows it. and what I've learnt a lot from we've had a lot of caretakers in the past of Amar Mahal, a lot of old senior staff members who have been here for 30 years, 40 years, 50 years. So learning a So lot there from is them them also also. over time because they know things I don't know. मैं क्या 33-34 साल का हूँ उनको ज़्यादा पता है. And also what I've learned from my little travels in Europe or in the UK is things can be done, things can be restored. It is possible. You know, sometimes It's we not think impossible. it's not impossible. They're doing it It's in just other the places. initiative. It's the initiative, the endeavor, you And know, the that desire the also. desire to do that it. Yes. you have to conserve Yes. it. There's some of these old statues. There's this old bronze statue there. There's one little fountain statue here. These are again old things that were These are very placed old one. Okay. during that time when the palace was made. And if you see the layout of the entire complex, it's terraces. This is the highest terrace, then you go on a lower terrace, lower, वैसे, and Karan Nagar is the lowest terrace. Okay. Karan Nagar used to be part of the gardens of the palace. And then it was converted into a... It was converted into a residential colony later on. And you have a beautiful view of Trikuta Hills, Trikuta Hills. Mata Vaishno Devi, which our ancestors discovered and developed. The route of the Vaishno Devi was, I think, from the Gulab Singh onwards, they kept... Yes, and the first doing tunnel was opened by my grandfather, Dr. Karan Singh Ji, during his tenure in Jammu and Kashmir. Which is, I don't think it's still used now. They have a new route. New अब तो routes, yeah. बिल्कुल ही नया route है. I was, you know, we don't only restore the things you can visually see. There are a lot of things underground. For example, I recently restored the entire plumbing drainage system. And that And is that it is fascinating, Dr. Manali ji. It's fascinating. The pipes and the drainage systems laid back then in 1890s is in pristine condition. Still working. I opened it, it looks like someone made it today. Uh-huh. So, you know, things were made to last back in the day. So you have now air This is the conditioning signage also? board, you know, for the inauguration in 1975, 13th April को बैसाखी के दिन, अच्छा, किया था. auspicious day, it was inaugurated. The Prime Minister had come, Indira Gandhi ji had come. So this half is the museum section and that is a private residence. Okay. So you can tell these pillars. The old is, the upper part is still old. This is the new restored pillar. अच्छा, ये this is... अच्छा, you can
So see the we still difference. want to make it look old. We don't want it to look like a new building. Yeah, You know? you So can see the difference. you है can ना? see the difference in the smooth finish and the. So, which wood has been used here? This is all mostly deodar. Deodar. Mostly deodar. And the Tavi festival is held here. A lot of the events take place in the garden here. So that is also another way of just sustaining this Yes. building, the culture. You know, maintaining the culture, the traditions. There are a lot of things that can be done. We started outreach programs with the Kala Kendra Cultural Academy for the past 2 years. You know, not only restricting ourselves to Amar Mahal and the palace complex, reaching out to the city, City. you know, opening more satellite locations, areas. I would like to, at some point, maybe this year, next year, have a small event in Delhi. Why should we restrict ourselves to Jammu and Yes. Kashmir? And we have a lot of Dogra families there. Huh? And the People in people Delhi, from in they should Bombay, in see. Bangalore should know what's happening in Wow. Jammu, the culture of Jammu. So, viewers, this was our journey into the past of the Amar Mahal Museum, Amar Mahal Palace. We came to know about the stories of about the family, of how the Maharani Tara Devi, she used to spend time here, the important functions and events which took place, and we are thankful to Martan ji. He has helped us to know all these things, and he is doing remarkable work so far as the conservation of Amar Mahal is concerned or other properties. We admire his efforts, and now you know the drill, what we have to do. You please give us comments. If you know anything about Amar Mahal, you know anything about Maharani Tara Devi, any anecdotes which you can share with us, or आपको पता drill, you have to like, you have to share and give it a hype also. Thank you.